भारत संघ इंडिया होली 2025 का उद्घाटन समाचार वार्ता में नहीं रखा। के साथ इंडिया हेल्थ 2025 की भव्य शुरुआत। हेल्थ केयर क्षेत्र में सिंगल स्पेशलिटी मॉडल पर आधारित श्वेत पत्र व्हाइट पेपर जारी, बड़े पैमाने पर इलाज की नई दिशा। 2 समानांतर कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल मेडटेक कनेक्ट और हेल्थ केयर 360 डिग्री की शुरुआत प्रभावशाली सत्रों के साथ। इंडिया हेल्थ नेक्स्ट अवार्ड्स के पहले संस्करण का आयोजन नवाचार और उत्कृष्ट कार्य के लिए इंडस्ट्री के अग्रणी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। प्रमुख इंडस्ट्री संगठनों के सहयोग से आयोजित यह इवेंट मेक इन इंडिया और डिजिटल हेल्थ मिशन के विजन को साकार करता है। नई दिल्ली, 11 जुलाई 2025। भारत मंडपम, नई दिल्ली में आज इंडिया हेल्थ एग्जीबिशन 2025 के दूसरे संस्करण की भव्य शुरुआत हुई। इन्फोमा मार्केट्स इन इंडिया द्वारा आयोजित ये 3 दिवसीय आयोजन 13 जुलाई तक चलेगा। ये कार्यक्रम देश में हेल्थ केयर और मेडिकल टेक्नोलॉजी मेडटेक सेक्टर की तेजी से बढ़ती जरूरतों और संभावनाओं को दर्शाता है। अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025-26 में इस क्षेत्र में नौकरियों में 15-20% की बढ़ोतरी होगी, जो इस बात का संकेत है कि तकनीक आधारित हेल्थ केयर समाधानों की मांग लगातार बढ़ रही है और स्वास्थ्य सेवाओं में टेक्नोलॉजी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। उद्घाटन समारोह में कई प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, प्रबंध निदेशक व संस्थापक सीईओ AMTZ, डॉक्टर गिरधर ज्ञानी, महानिदेशक एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया, श्री राजीव नाथ MD, हिंदुस्तान सिरिंज एंड मेडिकल डिवाइस लिमिटेड और फोरम कोऑर्डिनेटर एम सुश्री वीना कोहली, CEO वेंगर डायग्नोस्टिक्स, पूर्व अध्यक्ष आदमी श्री हिमांशु बैद MD, पॉली मेडिक्योर और वाइस प्रेसिडेंट नेट हेल्थ हब श्री योगेश मुद्रास MD, इन्फोमा मार्केट्स इंडिया श्री गोप मेनन CFO, इन्फोमा मार्केट्स IMEA और श्री राहुल देशपांडे, सीनियर ग्रुप डायरेक्टर, इन्फोमा मार्केट्स इंडिया जैसे गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। विशाखापत्तनम स्थित आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन AMTZ में दुनिया की पहली समर्पित मेडिकल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी शुरू होने जा रही है। इसकी घोषणा AMTZ के प्रबंध निदेशक, संस्थापक और CEO डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने की। ये नवाचार आधारित संस्था MTech, MBA और PhD जैसे उच्च स्तरीय डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश करेगी, जिसका उद्देश्य मेडिकल टेक्नोलॉजी क्षेत्र में कौशल विकास को एक नई दिशा देना है। इस ऐतिहासिक पहल को कई प्रमुख उद्योग नेताओं का समर्थन प्राप्त है, जिनमें शामिल हैं श्री राजीव नाथ में which is the show. The legacy is the world's largest show, Arab Health, that we do as our organizers in Dubai, which is the world's largest show. We have tried to launch this show, create that similar momentum in India by launching India Health last year, and we launched in Dwarka last year and have brought it to this heart of Delhi in Pragati Maidan. This year we are having over 300 brands exhibiting, and this is a show where the entire healthcare sector is there. You'll see anything and everything related to the healthcare sector, with you would say the healthcare infrastructure, the innovations, technologies that are happening over there, any healthcare product that is needed, diagnostics, everything is being showcased over here. Beyond that, we also have 2 parallel tracks of conferences that are happening. One is Global MedTech Connect, which is more on a regulatory conference that is happening. At the same time, we also have the India Health Conference, which is talking about innovations in healthcare, about artificial intelligence, there are a lot of different topics. We also have, for the first time, launching the India Health Next Awards to accolade the achievers of this industry, be it the innovators, the organizations who have done something, the personas who have done achieved over this last year, something which will, as Informa, definitely feel we need to contribute to this industry by recognizing them. So much is going to happen over these 3 days. There's Innovation Pavilion. We have the Italian Pavilion here for the first time coming to India Health. So over these 3 days, and we are expecting over 8,000 healthcare professionals visiting this show in these 3 days. So that's something about the show. All my MD, founder, CEO, AMTZ, Andhra Pradesh Medical Technology Zone, who's joined us here. For this media briefing, we have Dr. Girdhar Gyani, who's also Director General of AHPI. We have Mr. Rajiv Nath, Managing Director, Hindustan Syringes and Medical Device Limited, and also Forum Coordinator of IMED, which is the All Association of Indian Medical Device Industry.
We also have Dr. Sunil Kedarpal, who is Director AHPI, the Association of Healthcare Providers of India. And sitting next to me on my left side is Dr. Raju Chipper, who is Vice President of Surgeon and Medical Technologies Limited and Joint Coordinator, Government and Public Affairs, IMED. I'll just pass on the mic to each one of them. They will talk about this industry. They will also share something about this event. And then finally we'll open the floor for questions. So starting with Dr. starting with Dr. Jitendra Sharma. Good morning, everyone. Thank you for bringing this gathering again in India. We are at a very interesting time. Mr. Rajiv Nath in the morning mentioned that 15 years ago we were 96% import dependent in medical technology. Today we are 65-66% import dependent. जिस रफ्तार से इंपोर्ट कम हो रहा है और उससे भी ज़्यादा जिस रफ्तार से एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है, प्रोडक्शन कैपेसिटीज बढ़ रही है. The pace at which our indigenous industry is growing. एक रेलवे स्टेशन पर आप वंदे भारत ट्रेन देखते हैं, उस पे लिखा होता है मेड इन इंडिया, बट किसी हॉस्पिटल पे आप नहीं देखते हैं मेड इन इंडिया, क्योंकि हम लोग ब्रॉडली इंपोर्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी है. और जिस रफ्तार से इंडिजिनाइजेशन बढ़ रहा है, द वे वी आर ग्रोइंग इन सेल प्रोडक्शन, by 2032-33 we will be an import neutral country. Our import will come down to less than 50%, which is the brightest spot in our radar for next 7 to 8 years. So it is a very correct time to bring in pharma markets, India Health in India, in Delhi. The perfect time. So you are actually scripting the history. So my congratulations to this whole team that has brought all of us together. All I can say is, this is the best time to do what you are doing. And in this best time, you have the best people with you. The healthcare provider, the manufacturer, the industry, the government, everybody is rallying with you, behind you, to make this the most successful event and a precursor to many successes in the future. But we are looking at the golden time, and today we are at the golden spot. So thank you. Dr. Girdhar Gyani. देखिए, डॉक्टर शर्मा ने जो बात बताई आपको अबाउट द मेडिकल टेक्नोलॉजी, आई विल ऐड वन मोर फैक्टर इनटू दिस. You know, very few people are aware about that India's life expectancy at the time of independence was 37 years. आपको यकीन है कि हम लोग 37 years थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आज जो है 73 years हो गई है. ये कैसे हुआ है? ये हुआ है मेडिकल टेक्नोलॉजी के आने से, डायग्नोस्टिक के इम्प्रूवमेंट से, डॉक्टर्स की क्वालिफिकेशन के बढ़ने से. ये सारी तमाम चीज़ें हो रही हैं. लेकिन ये मेडिकल टेक्नोलॉजी, जैसे शर्मा जी ने आपको बताया, हम लोग 66% डिपेंडेंट थे, सॉरी 96%. और अभी भी धीरे धीरे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे डिफेंस के ऊपर बहुत जोर डाला है, इंडिजिनाइजेशन के ऊपर, नाउ नेक्स्ट फोकस इज कमिंग ऑन इंडिजिनाइजेशन ऑफ द मेडिकल टेक्नोलॉजी. इसी से ही अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव होगी, बिकॉज पीपल कीप सेइंग हेल्थ केयर महंगी है, कॉस्टली है, लेकिन यू आर नॉट रियलाइजिंग इसी मेडिकल टेक्नोलॉजी से आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज 73 है. और अगर हम मेडिकल टेक्नोलॉजी को इंडिजिनाइज कर देंगे, दिस कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट विल कम डाउन ड्रास्टिकली. एंड दैट इज वाई दिस इन्फॉर्मा जो इंडिया हेल्थ का जो ये समिट हो रहा है यहाँ पर, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसके थ्रू हम लोग एक अवेयरनेस लाते हैं, एक नेटवर्किंग लाते हैं. एंड दैट इज वेयर वी अगेन वांट टू थैंक द इन्फॉर्मा मार्केट फॉर ब्रिंगिंग इंडिया हेल्थ इन आवर कंट्री. Thank you so much, Dr. Rajuna. Ms. Rajuna. Namaskar everyone. Welcome friends to this interaction. Very briefly about the medical device industry. We are here of course to serve the healthcare providers and the patients. Our job is to give the instrumentation, the equipments, the disposables, the consumables, the implants, the IVD reagents which are required both in diagnosis and in treatment of the patients. Currently in India, around 3,400 factories have been given manufacturing license by CDSCO.
to around estimated 1,500 manufacturers of medical devices. Our imports are to the tune of $8 billion. Our exports have crossed last year $4 billion. In one product line, I am happy to state, consumables and disposables, our exports at $1.8 billion are higher than our imports at $1.2 billion. We want to see similarly growth rate where now our exports will exceed our imports in the case of implants, in the case of instrumentation, in the case of electronics, and in the case of IVD reagents. 2023, the Prime Minister announced National Medical Device Policy. He put the vision of making India the manufacturing hub. Events like this are now bringing India to the centerfold globally. Conferences and the ecosystem to make components, raw materials, equipment, machinery are the next step forward to make a resilient industry in India. And then we can have affordable and accessible healthcare based on affordable and accessible medical devices made in the country over here. And our job is to serve you all. Welcome to ask any questions and we are here to serve you. Thank you. Thank you, Mr. Arjunath. Over to Dr. Sunil Kedarpal. Thank you, Yogesh ji, and congratulations to Informa Markets for organizing India Health 2.0. I was also a part of India Health 1, and now I could see the growth and the magnitude and the way the India Health has grown in the next version itself. So, AHPI, Association of Healthcare Providers, we represent majority of healthcare institutions in the country. We have 20,000 hospitals as our members, and we operate through 20 functional regional state chapters. This is the bandwidth, the reach we have in our country, and this association, with the Informa Market, we have been the association partner with Informa Market for this event, India Health, and this is a great opportunity, a great platform. So my request to each one of you participating in this event is to leverage the opportunity to explore business, innovation, policy, academia, networking, and collaboration. So my best wishes to India Health, and thank you very much. Thank you. Thank you so much. And finally, Dr. Rajiv Chibbar, who is Vice President of Surgeon and Medical Technologies and also Joint Coordinator Government Public Affairs at Diamond. I think what Dr. Sharma, Dr. Gyani and Rajiv ji just mentioned, we have to leverage India as the strongest medtech hub. हम आज एशिया में perhaps 4th and 5th सबसे strongest medtech hub है. Globally हम लोग first 20 में आते हैं. And honestly, with this kind of pace, with the kind of policies that are now blooming, this is something which can take us to become amongst the first top 3 medical devices hub, possibly before 2047 in any case, but yes, by 2030, 2040, we will be amongst the top. So I congratulate not only the government, but it's also a congratulatory moment for Informa Markets, as both Dr. Sharma and Rajiv ji said. Such kind of events actually help to underscore the kind of technology advancements that we've had, the kind of resilience that we've been able to really provide to the healthcare sector, and we're moving more and more. आज supply chains की अगर हम बात करें, तो even supply chain resilience में भी भारत अग्रणी स्थान पे है. So we will take this forward. Thank you very much.